तो ये मैं सामने कर ये है और ये है हाँ कर दे हो जाएगी नहीं अरे मैं तो को भी लड़के से डर जाते हैं बात कर रहे हैं अरे बस कल बॉम्बला चला दिवाली खत्म हो गया की करते मैंने तो नहीं किया तो देखो देखा वापस तो नहीं गया देखो बॉम्बला तो नहीं किया था मैं ना पूरी किया अब मैंने फोटो लगा है और स्पीकर मैंने कैसे किया मैंने पहले तो हॉल किया तो मैंने तो फोन में बॉम्ब था मुझे नहीं लगता वो रेड फिश की खरीदना थी तो इसमें जोड़ा था कौन सा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री कलेक्टर का सब्जेक्ट क्यों फिजिक्स कल हाँ कल ही वो कौन ले रहा है वो एक हमारा नाम से कल तो लगते का किसका नहीं 2 घंटे का 2 घंटे ये बात नहीं तेरा एजुकेशन में सुना एजुकेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा पढ़ेगा तो कैसा सुन सकते हैं सब तो आप भी ध्यान देना आज क्या पढ़ाएंगे लास्ट चैप्टर तो हो गया ना क्या पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर हो गया ना क्या पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल थिंग्स लोड अच्छा क्यों रखते हैं इसमें क्या है उसमें सिर्फ वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैसे बनाना है वो आएगा ठीक है फिर ऐसे बैलेंस से होता है वो गाने ऐसे सब उसमें सीखे नहीं गया मैंने ये शर्ट खरीदे देखा नहीं फिर पहले घूम रहा है आज नहीं था शर्ट के साथ है मैथ्स का तो आ गया था हाँ मुझे मिला जॉब भी हाँ इस पेन में जैसा जो लिखा था मैंने लिखा था टेस्ट हाँ तेरे को नहीं आया ट्यूशन नहीं आया तो आ जाएगा कल पेपर है दोनों का साथ में था ना हम तीनों ने लिखा था
अगर तुम लोग का पहला कैसे है तो इसको आज मिसेस कैसे है मुझे तो पता चला 11 से लग मेरे को आज 11 बजे तो तेरा टॉप सीक्रेट भी है चेक किया इसके लिए लेते मुझे कितना देखते नहीं है क्या मम्मी तो रोज करता है मम्मी ने पता है आज तो 50 है 15 दिन से 15 मुझे मुझे 11 मिले अरे पाउच नहीं पाउच दे दो मतलब मेरा पाउच नहीं हम पैसे निकाल देंगे कैंसर मैं वो पे में थे ये पैसे नहीं अरे एक क्या चाहिए मेरा पेन ये वैसे देखो वैसे गोल एक पूरे को 100% है क्या बहुत तो नहीं पड़ा था तेरे बहुत था हाँ वो पढ़ा था क्या हुआ तूने पढ़ा मैंने क्यों पढ़ा हम लोग ने तो नहीं पढ़ा लेकिन क्या लगता है मेरे पास मेरे पापा अंबानी है वो ऐसे मेरे लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर जैसे अंबानी हमेशा अपने इधर ही बस उसका ऑफिस है इधर ही उसका ऑफिस है उसको फिर भी हेलीकॉप्टर चाहिए ऐसे साइड में ऐसे उतरेगा मैं ऐसे करूंगी आज लास्ट लेक्चर लास्ट मैं इसका चलो और मुझे लेक्चर नेक्स्ट हाँ लास्ट ये तूने खाली नेक्स्ट नहीं आज इनका नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कर रही है प्रैक्टिकल कराने के बाद फिर दो चाहिए ए जल्दी कर ना साइड हम लोग को भी साइड करना पता चला सबको लेट रिमार्क दे दिया ये चल है या अभी तक पहले एक ही बार लेट हुई हो हमारा हाँ रुपया डेटा मेरे को फिजिक्स की लेक्चर में लेट टाइम में क्या क्लास में नेक्स्ट टाइम क्लास में नेक्स्ट इज द क्लास में जाना था और इसको चैनल भी देखिए नेक्स्ट इज भी आज लगता है हेलो केमिस्ट्री में कितना है मुझे कहा है नहीं आया मुझे मेरे पापा को बोलते हैं तो फिर मुझे बताया मैं सेंड कर देती हूँ आता है तुम्हें बस कार्ड आता है बस कार्ड आ जाता है मुझे नहीं है मुझे केमिस्ट्री नहीं मिला मुझे मैथ्स मिला क्या इसको दूसरे साथ बात करेंगे अच्छा वो देखना Again, there is change in the configuration of the class. Ashanti is missing. And Govala, no, she is Shanti. All girls are Shanti. Only few Ashantis are there. Right now, anyways. Chalo, so today for us it is the last day.
Today I will complete with the syllabus. This topic, I think in your school it is already completed. How it is completed, I don't know. आपने कितना कर लिया है, कितना आपको आता है, even I am not aware of that thing. But I am thinking, is this topic according to my थोड़ा हटके, not with the reference of our this one textbook. Textbook का reference तो है, but थोड़ा अलग वाले. मैंने क्या बोल दिया शांति अशांति जी आई हुई शांति हो गई चलो नॉट पुट टुगेदर नाउ आई विल कम एंड सिट हियर ऑन सेकंड पेज बस आई नेक्स्ट वीक हां तो हम लोग स्टॉप कर देंगे after all हाँ बिल्कुल very difficult. So our last topic is practical. Today. चलो girls stop okay congratulations girls now it is not over. हाँ मेरा भी था सैटरडे सैटरडे को लास्ट ओके चलो हैप्पी बर्थडे प्री हैप्पी चलो लेट्स अरे यार बोयस tomorrow happy birthday in advance और किसका बर्थडे है मेरा भी दैट इज प्लस हो गया डन ना belated happy birthday चलो जिनका हो गया belated जिनका है एडवांस में happy birthday okay anyways now next year we will enter in class 10 okay now you are already in class 10 because you have completed this topic and this okay I will not give answer this way let us see it depends on talking okay chalo but this topic it is there in class 10 whoever may be your teacher this topic it is in class 10 now after this topic it is very easy or again two boys have missing Azam and they will not touch क्या करते हैं तो बोलो जल्दी आ जाते हैं नहीं दक्ष वाले अच्छा चलो छोड़ो जल्दी आते लेट आते हैं let's start so this topic as it is there in class 10 now here the number of reactions which are given they are very less for 9th standard but for 10th standard many reactions are there. But the main interesting thing is that same topic, same gas, few reactions as it is there in 9 as well as 10. Now main thing why we have to study this topic. What is the use of this topic? हम क्या करने वाले हैं इसको करते इतना reaction there so many things are there we are not able to understand वो reaction कैसे याद रखना है why we have to study this topic okay now this bottle we know this bottle contain water okay this plastic bottle contain water but once you enter in the chemistry lab whichever bottles there are many reagent bottles okay all bottles are transparent few bottles are brown color amber colored bottle as per the reagent they are kept in that particular color bottle but I cannot use अगर bottle ये रखा है chemistry lab में तो I will not use this water for as a chemist I will not use that's why I am keeping two bottles two separate bottles one is black color bottle metal bottle and another is again metal bottle two bottles I am keeping बताती हूँ मैंने बोला ना पानी का बॉटल भी दो रहता है मेरा खुद का मैं एग्जांपल देती हूँ two bottles are always पीने का पानी कोई एक पानी वाला सिर्फ पीने वाला एक से हाथ धोने वाला because I don't trust anyone and the moment we enter in the lab there is no surety that this bottle will contain only and only water anything can happen in my absence my student can add anything in that bottle okay by mistake our lab assistant may keep that bottle somewhere
the at standard position, but student in history activity, they can change that bottle position. For that, we need to taste it whether that bottle it contains that label wala solution or the different one. Okay, whether that solution it is acid, basic or neutral. सब कुछ करना पड़ेगा ना इससे every time if you see in the lab bottles are there, reagent bottles are there with proper label. Sometime if we are preparing the solution, we are writing, for example, it is 0.1 molar HCl solution, date on which we have prepared that solution. तो याद रखना here after मैंने आपको क्या example दिया है in chemistry lab every time you have to check the label. Check the label, whatever medicines you are having at home. You are checking the expiry date ना if you are keeping it for the longer time. Expiry date देख के ही करते हो ना कि ऐसे ही खा लेते हो. कभी किया है ऐसे? नहीं किया ना करना भी. हाँ तो expiry date it is very important. It is necessary to know the name of that medicine because in box there may be many medicines. बहुत सारे टेबलेट रखे हुए हैं लेकिन नाम नहीं पता है तो कैसे भी खा लोगे? Name is important. Name is important. For example, उसपे name अगर नहीं दिया उसका name निकल गया, can you consume that medicine? Tablet, तो भी syrup में कुछ भी आपका वो ले लोगे ऐसे? लोगे? किसका कलर? किसका कलर? देखो, हमको टॉपिक से डाइवर्ट मत करना, हमको उधर ही जाना है. कलर मतलब किसका कलर? कलर you are saying of that packing color or medicine? Packing both. कलर मेडिसिन का अच्छा कलर एंड मेडिसिन का वो प्रॉपर्ली रखा रहेगा ना तो बिफोर एक्सपायरी डेट इट विल नॉट चेंज हाँ बट इट मे हैपन व्हाइल रिमूविंग दैट पर्टिकुलर पार्ट अनदर पार्ट इज आल्सो रिमूव्ड वो फट जाता है उसका नाम हमको पता नहीं होता तो वो केयरफुली निकालना पड़ता है ऐसी गलती से निकाला हुआ मेडिसिन नोबडी विल कैच बिकॉज़ इट मे क्रिएट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. तो ये टॉपिक हमको इसलिए पढ़ना है so that we can know which substance it is given to you. Okay, whether that substance is acidic in nature, whether it is basic in nature, or it is neutral. Whether that substance contain hydrogen in combined state, which will release H2 gas on reaction with some other metal. Whether it is releasing CO2 gas, whether it is releasing Cl2 gas, whether it is releasing ammonia gas, कौन सा gas release हो रहा है, depending on that also we can determine that compound contain which atom. Okay. Now normally how we are doing, how we are performing experiment in the lab. So in your notebook we are making 3 columns. First column it is always for test. Second column is for observation and third column is for inference. This is our method of doing solving or finding the unknown compound. 3 columns are very good. तो आपको idea है. Now in test, sometime in some lab manuals it is given experiment. एक सब एक्टिविटी आपका बंद करो खाली ध्यान से सुनो क्योंकि आपने ऑलरेडी शायद किसी का हो गया रहेगा किसी का नहीं हो गया. Now first one test or the experiment. Both things are one and the same. Here you have to give what is the procedure. What is the procedure? For example, if you are preparing NaOH solution. NaOH solution. Okay? हाँ वो तो एम वगैरह तो सारे एक्सपेरिमेंट में कॉमन है हम लोग यहाँ पे मेन अपने पॉइंट एम इज कॉमन रिजल्ट प्रिकॉशन इट इज कॉमन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी आर डूइंग आइदर यू गो फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्रैक्टिकल एम तो आपको लिखना ही है ओके टेस्ट व्हाट वी आर डूइंग हियर वी आर राइटिंग द प्रोसीजर ओके अभी आपको NaOH का नहीं पता तो मैं आपको नॉर्मल वाला देती हूँ सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग शुगर सॉल्यूशन. So what is that? This one test or experiment. What is the procedure? Beta, what you are doing? You are having mobile. Sure. Sit properly. Oh, so every time this. This common problem. Okay, so for example, if you are preparing sugar solution. For sugar solution, how much you have to prepare? That you might be knowing. You have to prepare 5 ml, 50 ml, 500 ml. ना तो पता है
How much sugar quantity you require? वो भी आपको पता रहेगा. Whether you will require 5 gram, whether you will require pinch of sugar. Okay, that also you know. So for example, I want to prepare 500 of solution. 500 of solution. For that, I may need spoon of sugar. I may need 10 grams of sugar. That quantity I am aware. So I will take that particular quantity. For example, I am preparing only 1 tablespoon of sugar solution. तो मैं कितना लूंगी? आधा किलो शक्कर लूंगी. 1 tablespoon में how much I need? Small quantity. Small quantity. 1 gram is sufficient. Okay. So under this part, what I will write? For example, 1 gram of salt. Okay. Salt लिया है मैंने. बोलते टाइम sugar बोला है. Now for experiment. Salt, it is a unique compound. It is not your common salt. It is not नमक जो हम लोग घर में खाते हैं. याद रखना. हाँ, शुगर के साथ में जाएंगे. शुगर के साथ में एग्जांपल पूरा करेंगे. Then we will go with salt. लोग को आदत पड़ गया ना salt लिखने का. 1 gram of substance. Okay, problem is solved. It may be your sugar, it may be salt, plus 1 test tube water. 1 test tube water. This is my procedure. This is my test. Done. So when I add 1 gram of salt in 1 test tube of water, 1 gram of compound in 1 test tube of water, it will dissolve immediately. हो जाएगा, तुरंत घुल जाएगा. नहीं ना, ऐसा मतलब नहीं हो गया ना. थोड़ा शेक करना पड़ेगा. So here also we will be careful. We will not keep our thumb like this और ऐसा शेक नहीं करना चाहिए. ऐसा रखो, शेक. Okay, it will dissolve. Then next step. Now when you have dissolved that salt or compound in the test tube, what is your observation? What is your observation? Now in observation, now this is only the salt solution, so it will get dissolved, you will get homogeneous solution, right? But some reactions are like that, where you will get colorless gas. You may get colored gas. Okay, you may get certain smell, जिसको हम लोग odor बोलते हैं. Odor. हाँ नहीं उतना अभी उतना नहीं, पहले समझ लो अच्छे से. Okay, so these are the various possibilities. From that, what is your conclusion? What is your conclusion? For example, if you are going with this one, it is dissolving. It is completely dissolved. Salt or sugar, namak lo ya shakkar lo, it will get completely dissolved. Here you will get homogeneous solution. So what you will write in inference? क्या लिखोगे? Inference में आपका conclusion क्या होगा? It is soluble. हाँ? कुछ भी मुझे कुछ नहीं समझ. अरे नहीं, सबसे पहले stop saying अरे. हाँ? को नहीं पता. It is soluble. It is soluble. It is soluble. Whether it is giving any color. It is giving. No, it doesn't. And then normal sugar salt, it will not give any color. But instead of that, if you have any colored compound, copper sulfate if you are using, copper sulfate, it will form blue color. हाँ, brown sugar पे मत जाना. इधर copper sulfate. अपने chemistry के circle में है ना. Copper sulfate, it will give blue color. हाँ, if you are using blue. Copper sulfate blue. किसका कौन सा कलर? ग्रीन तो नहीं रहता है, इट इज ब्लू कलर. नहीं, नो, ग्रीन कलर इट इज ऑफ निकेल क्लोराइड. You find out and tell me. वो ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग का कलर क्या है? अगर copper sulfate, it is blue in color. If you are dissolving in water, you will get blue colored solution. But if you are heating it, it will be converted into colorless, white color. समझ में आया difference and why it is happening? Again, that thing is mentioned.
समझ में आया ना? कॉपर सल्फेट किधर पे जाके बताना नहीं है, इट इज ग्रीनिश कलर, इट इज ब्लू कलर, और ब्लूइश ग्रीन कौन से वो आप फाइंड आउट करो. ओके, सो हियर observation, it is dissolved in water, completely dissolved, it is homogeneous solution. You can use more chemical terms also. Chemical मतलब मैंने homogeneous बोला है. Okay, colorless solution. Any gas is formed odorless, right now? And her inference, what we can write in inference? No gases formed. हाँ, no gases formed मतलब क्या? What is meaning of that? And We are working on no limited. gases involved. हाँ हाँ, no gases. वो तो लिख दिया ना हमने ऑब्जर्वेशन में. Inference में क्या? इन्फ्लुएंस में कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन में No color क्या? जितना पढ़ेगा जितना बड़ा एंट्रेंस में लिखा रहता है समझो NaOH गैस घूम रहे फिर लिखेंगे कि NaOH गैस इज सस्पेक्टेड. नहीं, if you are getting brown color gas, हाँ. if you are getting brown color gas, then brown color gas it is for and तो आप वहाँ पे लिखोगे NO2 may be present. वही भी बोला हाँ, if you are getting pungent smell, colorless gets the pungent smell, गंदी सी smell आती है, then you will write NH3 may be present. If you are getting rotten egg smell, understood? तो आपको whatever observation you are doing now, according to your observation, you have to write down the conclusion. Now normally what is happening for 10th standard, I don't know. For 12th standard, we are not providing lab manual. लैब मैनुअल, अभी लैब मैनुअल क्या रहता है? सारे टेस्ट इसमें लिखे होते हैं. टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस. स्टूडेंट विल कीप दैट लैब मैनुअल व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड ही विल परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट. तो उनको पूरा हेल्प नहीं मिलता है. Everything that student has to prepare by his own. But for normal practical, student is allowed to use the lab. तो घर पे लैब मैनुअल में पूरा चार्ट होगा, पूरा चार्ट. कौन से टेस्ट करने, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टेस्ट करने हैं ना. व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, पॉसिबल ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल बी द पॉसिबल इन्फरेंस फॉर दैट ऑब्जर्वेशन. एवरीथिंग इज मेंशन that you can use for your regular practical but not during the board practical exam. तो इसके लिए आपको पूरा लर्न करके जाना है along with प्रैक्टिकल एग्जाम में जो अलाउ नॉर्मल स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम में जो अलाउ normal practical mock exam you are saying ना. एक्चुअल प्रैक्टिकल exam में नहीं अलाउ. lab manual is not allowed, but during regular practical it is allowed. समझ में आया? This thing you understood? What is the difference between test, experiment, observation and inference? This is clear? No doubt now. So test is what? It is a procedure, method which you are going to do. Okay? Which procedure is this? Our observation is something different. Huh? Observation. So, है ना? So which inference? He is not in class. Inference. So same. Okay, चलो चलो. ये उठो उठो, आया नहीं तो नींद आ गया उसको और आज नींद में ही गया. हाँ, नींद में से उठ गया है. Okay, for test or experiment, you will write the procedure. Okay, how you are going to perform observation, whatever observation you are doing. For regular practical, chart is provided. For exam, chart is not provided. Okay, with respect to those observation, you can write down the inputs. इतना basic part आपको समझ में आ गया? Yes. Shanti, yeah. Sure. अभी next part, which test you have to take? ये जो मैंने बताया ना आपके लिए इतना सारा नहीं. For you it is limited, hardly few tests आते हैं. So first one, if you want here, I think in your book sequence is clear. Interface, simple experiment, action of heat, action of dilute sulfuric acid, apply the flame test. ये आपकी बुक का प्रिंट है. वो सब मुझे पता नहीं किस प्रिंट किसको मिला. वो अभी हम लोग हमारा प्रैक्टिस
कितना मिला 70.5 7 कहाँ चले गए मार्क्स तुम्हारे section B सेक्शन बी पीरियोडिक टेबल डोंट कितना मिला मेरा ये अच्छा देन atomic structure atomic structure इतना easy कितना इजी था एक्चुअल में इट वाज इजी balance sheet में एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने लिया था एटॉमिक नहीं स्ट्रक्चर सर ने किया क्या इतना डिफिकल्ट है theories they are not asking हाँ only atomic number mass number isotope isobar and few problems then again in 10th standard you have that हाँ वो learn करो please learn element from 1 to 30 with atomic number and mass ना 30 हाँ 30 तक करो अभी इसको कम मार्क्स मिला तो 1 to 30 करो आप हाँ यहाँ पे देखो so the first one sequence first one color first is color so as such in color you don't have to do anything in the color just you have to see the color of that salt salt is not your common salt हाँ ये याद रखना it may be colorless it may be colored colorless रहेगा तो आपको सिर्फ इतना लास्ट में लिखना है all color radicals are absent for colorless and for example if it is colored salt blue colored salt then what you will write here colored radicals are present okay then after color the next one is order second it is order now normally for our classes we are taking that order directly just we have to take 1 pinch of salt 1 drop of water rub it and smell एकदम सिंपल और इजी मेथड है क्या करना है salt with 1 drop of water rub it pinch में ही लेकर रब करना है और स्मेल करना है now which are the different orders कौन कौन से बताया मैंने either it may be odorless or pungent smell rotten egg smell or choking pungent smell is for chlorine and this smell it is similar to the bleaching powder tap water जो use करो if it contain more amount of bleaching powder ना तो वो smell आ जाता है क्लोरीन का ओके सो दिस सीजन में डालते हैं वो पाउडर इसमें डालते हैं रेनी सीजन में डालते हैं व्हाइट कलर का पाउडर ओके देन नेक्स्ट वन इज अ ड्राई हीटिंग टेस्ट हीटिंग के अंदर द नेक्स्ट वन इज ड्राई हीटिंग टेस्ट नाउ दिस ड्राई हीटिंग टेस्ट नॉर्मली वी आर डूइंग by heating the given salt in the test tube okay so when it is heated there may be either color change of the salt there may be cracking noise there may be gas formation the substance may sublimate okay or it may melt also so these are the different possibilities then the next test is a flame test हाँ बोलो बोलते जाओ फटाफट तो मैं ले but you prepare according to your test next one it is flame test flame test कैसे करना how to perform flame test flame test हाँ ऐसा वैसा कुछ नेक्स्ट टेस्ट इज फ्लेम टेस्ट नाउ हाउ दिस फ्लेम टेस्ट इज डन नाम से तो बड़ा अच्छा लग रहा है समथिंग विद द फ्लेम okay so something with the flame is very simple and easy small amount of salt with concentrated hydrochloric acid we have to make thick paste and that thick paste it is collected on platinum wire loop of platinum wire ऐसे वो platinum okay loop of platinum wire यहाँ पे collect करना है then you have to put this salt this paste not salt this paste on a blue flame blue flame so with the different radicals there will be change in the flame color
flame color, and from that you will come to know your salt contain which radical. For example, if it is calcium salt, then it will give red color, brick red. Okay, if it is barium salt, then it will give grassy red flame, grassy green. Then if it is lead salt, then it will give white, bluish white flame. हाँ, तो यहाँ पे पोटेशियम का भी और कलर्स आर गिवन. हाँ, that is lavender मतलब pink color. So here colors are given. Okay, and you will be getting this test if you are doing it properly. Now, mixture is very simple. It is salt with dissolve water, concentrated hydrochloric acid, thick paste on platinum wire, heat on oxidizing flame. Immediately you will get color change. From that you will come to know which radical it is given to you. Then after this, the next one, reagent, different reagent you have to use. So this reagent, it may be dilute acid or concentrated acid, and this dilute concentrated acid, it is H2SO4. Now in between we have missed one test, that is litmus paper test. Litmus paper test. What is करके अलग है. बराबर है, हाइड्रोजन का बॉन्ड हो सकता है. हाँ, you write paper. Normally, let me complete now. Normally, litmus paper test is used for identification to identify the nature of the given liquid, acid or base. There you will only identify whether the given solution, जैसे मैंने बोला था एक bottle में water है या क्या है, that only can be identified, but if we cannot detect strength of that acid or base, and for that we need pH. pH scale है आपको लेना है. हाँ, तो क्या है? What is that pH scale? Normal acidity 7 रहता है, normal और higher than तो Normal acidity 7 रहता है, मतलब normal acidity neutral 7 is neutral, and 0 to 5 is acidic. 1 to 7 is acid and 7 to 14 is base. 6 to 14, 1 to 7, 1 from 1 till 7. पर जीरो भी होता है ना. It is from 0 to 14. हो गया. Here it is 7. 7 neutral. This is acidic part. This is basic part. And at the extreme, it is highly acidic. This one it is highly basic. Okay. Acidity and basicity of the given solution is due to the presence of H positive for acid and OH negative for base. इतना फिलहाल के लिए इतना याद रखो. Okay. Now come back to the litmus paper test again. So first thing, how this litmus paper is prepared. It is prepared by the mixture of many reagents. Okay. Litmus paper are of two colored. One is red litmus, another is blue litmus paper. Okay. मैं ना फिर आपके पापा को बोलेगी I will wish you will study. She will do. हाँ पापा हाँ तो है ना थोड़ा फोकस करो यहाँ पे. मेरा वर्ड्स गलत नहीं होना चाहिए. तो मुझे पूछेंगे आपने तो बोला था ना, है ना. Otherwise do one thing. He was asking me whether I will take the exam city for non-standard again from beginning. No, why? अभी सोच लो क्या करना है. Okay, litmus paper, we can have either red litmus paper or blue litmus paper. Okay, now what are the color changes for this in acidic and basic solution? I think ऐसा कुछ नहीं. देखो इतना सा स्ट्रिप रहता है छोटा सा. Just you have to moist this strip and dip in that solution. पूरा please पूरा set. Acid. They say It is basic. Okay. moist red litmus paper turns Red turns blue. but when it is acid, so blue turns red.
Yes. Blue turns red. Okay, so if the solution is acidic, blue litmus paper turns red. If it is basic solution, then red litmus paper turns blue. And if only water is given, then Nothing, no change. there will be no change. So can we do this test only by using one litmus paper? Yeah. One. If I give you only one litmus paper, it may be your red, it may be blue. Can we do this test? हमारा acid को dip करेंगे, base को dip करेंगे, हाँ, तो क्या होगा? लिक्विड पेपर लगेगा। क्या होगा litmus paper? हो सकता है एक क्या? एक मिनट और My question understood or not? हाँ. बोल रहे हैं। Here it is changing color na. If you have three beakers with you, three नहीं लेते, two ही लेते. One beaker is of acid, one beaker is of base. We don't know which beaker contains which solution. So can we check the nature of that solution by using only one litmus paper? क्यों? हाँ. अगर नंबर कैसे? dip करेंगे, हाँ. तो For example, you are taking which litmus paper? Red. अच्छा, red ले लो. Then I don't know which solution is given to you. अगर बेस को रेड हुआ तो है ना, तो ऐसा ना, तो वैसा ना, वैसा ना, तो ऐसा ना नहीं. Here two solutions I have. This is one, this is another solution first, and this is solution first and second. So which litmus paper we have to take? Red. Right. No problem. Blue ले लिया, चलो blue. So blue litmus paper. Solution मुझे नहीं पता कौन सा. क्या करना है? मैम उसको पहले वॉइस Submerge करके dip कर दिया. Then Red. कलर चेंज हुआ तो Red बनेगा. तो मतलब acid है. color इसका change हो गया. If it is becoming from blue, it is becoming red. हम कलर तो एसिड है तो हाँ. ऑब्वियसली दूसरा वाला बेस हो So जाएगा if it is becoming red, what does it indicate? एसिड Blue to red. It is acidic solution. हाँ, it is acidic solution. Okay. अभी आपने उसको blue से red कर दिया, हो गया. Again we cannot dip same paper here. हाँ, पर अगर हमें ये पता है कि acidic है. ऐसे भी possible है. मैंने थोड़ा Starting solution से I can. अच्छा चल मैं change कर दूँ. By sentence से now I am taking distilled water. Now I am taking distilled water. चलो हमको नहीं पता. Unknown. तो जब मैं बोला कि एक बार टेबल लिया तो दूसरा बार नहीं कर मैंने ऐसे नहीं बोला. मैं कह रही हूँ पर red कर दिया ना उसको. Red वाला अगर दूसरे में dip करे तो blue को ड्राई तो दूसरा वाला उपयोग करेंगे ना फिर you get for that till that time it is dry and affected. मैम एक ही करके सब एक लीटर से जब हमें पता है कि एक एसिड का एक. Or you may have different solutions. तीन चार दे दिए आपको. Identify basic solution and acidic solution. तीन हमने तो कोई limited ही रखा था ना. We may have different because of acidic देके तीन चार रख देंगे mix करके. एग्जाम में तो ऐसे देते हैं अलग-अलग इसके pH का value find out करने के लिए. Okay. So acid, for acid, blue litmus turns red, and for basic, red litmus turns blue. Okay. So these are the different tests which one by one we have to perform. Okay. इसमें all gases. तो इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर क्या आएगा? Yes, we can use. उसका उत्तर ये है. We can use it. अच्छा है, ये भी अच्छा है. इसी था ना. अभी कौन से हमको we have to study? Gases. Total in your syllabus, total 10 gases. So in this table, total 10 gases are there. Those 10 gases we have to study by heart. Yeah.
Total 10 guesses are there. This 10 guesses we have to say. Okay. Now, I want everyone to take your notebook out. First, we will write down what is the color for the given guess, what is the order for the given guess, what is the nature for the given guess. So once we start with this topic, before we will answer it. कोई difficulty नहीं होगा. चलो notebook open करो. Yeah. हाँ. In textbook everything is given. In textbook everything is given. Then why you are writing answers on during your exam time? Practice कर रहे हो ना? Do practice. Open your notebook. Practice. ऐसा नहीं रहता ना बेटा. तुम लोग बहुत लेजी हो जाओगे if you are not writing. चलो ले लो अपना नोटबुक ओपन करो. 3 4 मेरे हाथ में लगा रही अरे तुझे कब लग गया हाथ को? कहाँ लग गई? मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही है. है इंटरनल है बहुत ज्यादा लग गया है. बहुत ज्यादा लग गई. Open your notebook. Don't give excuses. नहीं मुझे भी तो लग रहा है. मुझे कहाँ लग गया? इंटरनल डिसलोकेट हो गया Here. Three parts I have made. First is for neutral, second is for acidic, and third is for basic. One by one, write down which gases are there in neutral category. And again, I am repeating, same topic is there for class 10. Don't make any sound. First is H2, second O2, and third H2O. Then here, first one CO2, second SO2, then third H2S, fourth Cl2, then fifth HCl, and sixth NO2. NO2. And here only one Okay. So for neutral, very easy and simple to remember. If you are only going with water, water is made up of hydrogen and oxygen. So these three you can write together: hydrogen, oxygen, and water. Then for acidic, list is little bit longer, but not difficult, easy to remember. CO2, SO2, H2S, Cl2, HCl, and NO2. And the last one, only one gas, that is NH3. Now total it makes 10. Count karo, here 6, 3 and 4. हो गया 6 and 4, 10. Now under this category, all neutral gases are there. So when we are saying neutral, whether any action is there on litmus paper? No. Any action on litmus paper? No. No. Okay. Second category. Good reaction. Litmus paper. If it is blue, if it is blue, then it will be For acidic, blue to red. Litmus paper, litmus, blue to red. Sure. Then for basic,
red to blue. Litmus test, red to okay. Nature litmus paper. Now next point is for color. Oxygen, hydrogen, it is present in air also. Can you see color? Colorless. So write down here colorless. Colorless. Any order is there for hydrogen, oxygen? No. So write here colorless, orderless. लिखो वहाँ पे whatever columns you have made ना, write it down. Colorless, orderless. चलो. Then next one for CO2, colorless. Any order, specific order? No order. Okay. Then SO2, colorless, order. This is also pungent. हर चीज पंचर की हाँ ना. It is SO2 मैंने बताया है शायद. Sulfur. डाइऑक्साइड It is sulfur dioxide, but it contains sulfur na. Sulfur ka smell, burning matchstick. That smell, it is sulfur smell. So here you will get smell, sulfur smell. Then for H2S, rotan. Cl2, choking, pungent smell. HCl, it is having pungent smell. Slightly pungent smell. Then color, Cl2, okay. कौन सा? This is, it contain Cl2. Cl2 it is greenish color. हाँ? Greenish yellow. क्या बोला था? HCl gas का color, it is Cl2 का color, it is greenish color. अच्छा, you go with your textbook. हाँ मैम, फ्लोरीन का तो दिया है. Where it is greenish yellow. Write it down. I have written it. Then HCl. HCl colorless, smell pungent. A slightly pungent smell. Then NO2 brown. Red brown, it is brown. Smell reddish brown, you can say. Red brown mat karo. It is dark reddish shade. So reddish brown. And smell pungent again pungent. NO2. NO2. Irritating odor. Irritating odor. Irritating pungent. Irritation होगा, अच्छा नहीं लगेगा. Okay, यार. For NH3. Color, any color? No. Smell? Yes. हाँ, थोड़ा नाक में जलता है और वो क्या? Pungent. Okay, and one more thing, ammonia, it is used for making fertilizers also. Which fertilizer is made? Chlorofertilizer. Ammonium nitrate and बहुत सा- nuclear reaction nuclear reaction होता है. होता है क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन बड़ा तेज है वहाँ पे. ये चल क्या रहे हैं? हाँ, शांति. Now we have cleared it. हाँ. ये इनको रखते हैं. कितना सारा कुंडली होता है. और इसको तो उससे भी ज्यादा हो गया. उसका तो अंदर का नहीं दिख रहा है पूरा. सिंपल
Thank you. Coming. Ma'am, we are going back for a long time. Thank you. Once you have next they want Oh, are you spicy? Random method of running outside. अबे मैंने वाले में एक्टिव बनना था एक्टिव करा उसको गाड़ी नहीं आती उसको पूरी पता चला है उसको गाड़ी रहती है मराठी में बोल रहा है मराठी बोल रहा है लेकिन गाड़ी दे सकती पूरी पता मराठी सीमा ठीक तो है Maybe Saturday to Thursday को दे सकता आज तो जल्दी की पाए current class में कर रहे अबे इंग्लिश में कहते ना ऑलिवर ट्विस्ट मैंने दिया भी है भाई वो लगा से आगे प्रोग्राम देखियो एवरीवन सपाट काम तो भूल गया है भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मैंने चेक कर 12 तारीख को है क्या फनी क्लास है मेरा भी से पास में रख ले क्या मुझे कोई बर्थडे में नहीं आ रही अलग रिपीट किया है गाड़ी है अरे तेरा कल छुट्टी है भाई कल मैंने से ऐसे तो ये क्या बोल रहे हैं क्लास में आज देख तो देख स्टिकर लगा है और पहले मार चिकन कराएंगे दिखाओ जैसे अरे हमारे देखना कुछ भी नहीं है Please, हमारा टीम है सब है स्कूल का है भाई बैठा क्या पाने से क्या इंटेंस अरे सर कैसे सर ये बदला के कब लेके भाई इसका नाम भाई मैथ सर का नाम अरे तो प्रश्न नहीं है कोई प्रश्न देखिए तो
Are you better than the good are 69.5 highest than the. There is some popular. Ah, I. What's my. Oh, Good morning. Better. Yeah, yeah. 60 minutes over. After 60 minutes, it will be done. Okay. So three different natures we have: neutral, acidic, and basic. Okay. Sequence याद रख लेना. Then next thing, total how many gas? 10. 10. In first category, in neutral, only 3 gases are there: hydrogen, oxygen, and water vapors. Okay. Oxide मत करो. Then in basic, NH3. उठो वहां से, get up from there. आप ही उठो वहां से, उठो. शांति को कुछ काम नहीं है, खाली को बड़ा शांति करी बैठो. चलो यार चलो मुंह दे. बस उसका थोपड़ा मत देखना ना, आराम से. बट उधर नहीं देखने का, सिर्फ इधर देखने का. See where you are sitting. Then here CO2, SO2, H2S, Cl2, HCl, and NO2. Okay, this all are acidic gases, and for acidic gases, color of the which litmus paper we are using? Blue to red, and then red to blue. Okay, then color of the gases. These gases are colorless, odorless. This gases, this neutral, colorless, odorless. For neutral, for basic, pungent smell. Okay, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा slight variation is there. Only with few gases. Start from bottom. Here reddish brown. This is color. Huh? This all are color. Now come on the last point. Order. CO2. Actual में SO2. It contains sulfur ना. Smell. Burning sulfur smell. H2S. वो याद रहे. पंचन चो. ये नीचे वाला हो गया. Okay. This basic is your format. Then you have to understand. And with the description of gas, we will not go for this description again. Okay? As such, we have done it. Only the method we will see one by one. So if you are having your textbook, open karo. Open karo. Or then you ये टेबल जो आपने जहाँ बनाया है उसके नीचे और लिखो on heating नहीं इसके नीचे ऐसे टाइप में लिखना है on heating. So when oxides are heated, it will form which gas? Oxygen. Understood now? So on heating, first one oxides from oxygen. Yeah. Oxides इसके साथ में it forms O2 gas. Then next one carbonates. Carbon dioxide. Right on it. Oxide के नीचे लिखो carbonates, carbon dioxide. Then nitrates. हाँ रखो शांति. All Shantis are here. One Shanti is sitting here. Now which Shanti you are talking about? Okay, you are making that figure. Quality. But beta, कुछ बनाया है तो ठीक है. But normally, for practical I am saying, it has to be a doing.
ये हो गया क्या चाइना डिश, उतना ही बनाना है, अदरवाइज ये क्या है? वो उन्होंने उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए गैस मेड. ओके, सो कार्बोनेट इट फॉर्म्स carbon dioxide, nitrate, I think we have done NO2, NO2 gases, then sulfate, sulfur, SO2 gases form. And how we can get this water gas? by heating water vapor. By heating water. So for heating water vapor, collection of water vapor. If you have water vapor, then why you have to heat it? हाँ, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था while discussing that water gas. अरे Water is don't mix it. Concentrated sulfuric acid. Said by adding concentrated sulfuric acid. we are doing dry heating. But This if is you are dry heating. It is without water, without any liquid component. Only dry salt is heated in a test tube. अगर चाहिए था वाटर वेपर को कंडेंस करो. And now to see why we have to carry dry heating test. मेरा क्वेश्चन समझ में आया? By heating that substance in dry condition, we will get this required gases. Okay. Now one of our requirement is our H2O. So how we can obtain it by dry heating test? यहाँ पे मैंने कोई example दिया था when we were discussing colors. Copper sulfate is blue color. Oh, On heating it is converted into colorless. It contains that copper sulfate. It contains what is the formula of copper sulfate? And how many molecules? Two weight. अब मैं बोलूं अब मेरी copper sulfate is blue in color. It contains 5 water molecules. It is also called as green. Blue ही बोला ना मैंने. green बोला. Blue बोला नहीं मैंने. Green. अच्छा. It is blue. जब मैं starting से blue color बोल रही हूँ then when I will come on green color. Green color is of ferrous sulfate. Yes. It contains 7 water molecules. But sulfide. It contains 7 water molecules. Both are hydrated salt. Both salt on heating, they lost water molecule and they are converted into colorless compound. Okay, so उनका सारा water of crystallization it is removed. They will be converted into colorless and whatever vapors are collected now, they can be used as H2O gas. Understood? For that you don't have to condense water vapor, heat water vapor, convert water vapor. No, you will use crystalline amorphous, also crystalline hydrated copper sulfate, ferrous sulfate. वो वाला use करके उसका heat करना and by heating whatever vapors you will get, that vapors are nothing but our H2O. Yes, समझ में आया? H2O अलग से पानी उबाल के पानी कलेक्ट नहीं कर. So hydrides, also oxide on heating, on dry heating. Dry heating, it is normal dry heat कर. उसमें कोई liquid नहीं जाने वाला है. So on heating, oxide will be converted into oxygen. Okay, this reaction you will use for preparation of oxygen gas. Oxygen gas. Oxide से you will prepare oxygen gas. From copper sulfate you will prepare H2O gas. H2O gas. From nitrate you will prepare. From sulfide you will prepare sulfur dioxide gas. Only by heat. Only by heating. समझ में आया? So whichever gas we are having now, you have to tell nature of the gas, action on litmus paper. This preparation method I will give you कहाँ से कैसे बनाना है. For example, if you are studying oxygen, then we know it is prepared from oxide.
बराबर है ना, ऑक्साइड विल गिव ऑक्सीजन। इतने ही हमको स्टेप्स कर, ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन गैस। गो वन बाय वन, राइट डाउन नेचर, कलर, स्मेल। आप लिखो एक्शन ऑन लिटमस पेपर, ये फटाफट आप लोग लिखो। थिंग्स आर देयर ऑन बोर्ड फॉर हाइड्रोजन गैस। नंबर वन हाइड्रोजन गैस, नेचर, neutral. That will go under nature. Acidic, basic or neutral. So hydrogen gas, first point you will enter neutral in nature, then color, colorless, odorless. Action on litmus paper. No change with the litmus paper. Because it is. No changing of So the. it is neither acidic nor basic. हाँ वो समझ में आया। And sorry. Okay. So there are 4 points are given. Now listen carefully. Yes. First point color, colorless, odorless. Second neutral to litmus paper. Third point is action on burning candle. We have not discussed this point. Action on burning candle. बन हो जाएगा। Action on burning candle. If you pass hydrogen gas, तो वो जो candle है वो बुझ जाएगा नहीं चलेगा? चलेगा भाई। अरे हाइड्रोजन इनकम्बस्टेबल अरे बॉक्स एक्सटिंग्विशेबल मुझे नहीं पता extinguish हो नहीं, मुझे बस इतना पता है कि एक्सटिंग्विशर आई गॉट pop sound indicate presence of hydrogen. वो point है बात में। मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला, if you are passing hydrogen gas near this one burning can, whether it will burn continue, keep on burning or it will extinguish. Extinguish in the correct answer. Because oxygen it burns and hydrogen supports for burning. Yeah. Then next point, hydrogen mixed with oxygen air burns with pop sound when burning paper is तो आपको पता है burns with the pop sound बहुत करते हैं burns with the pop sound. Now preparation कैसे prepare करेंगे हम लोग hydrogen gas, because here we have not taken preparation right now. Copper sulfate. इधर hydrochloric acid. simple. See here, it is a simple reaction between metal and acid. Metal and acid. So write down metal. शांति। रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है, बाद में मैं एग्जांपल दूंगी। मेटल प्लस एसिड गिविंग सॉइल प्लस हाइड्रोजन गैस। मैम एसिड dilute either HCl or H2SO4 with active metals. कौन आयुष? कौन सा? सिंगल डबल जल्दी से डबल नहीं रिएक्शन आप लोगों को लिखनी, लेकिन फॉर राइटिंग दिस रिएक्शन फ्रॉम reactivity series, activity reactivity series, two terms are there na, you have to use metals above hydrogen or below hydrogen. above नीचे वाले जो होंगे there will not नहीं करने वाले, so rather So metals above hydrogen in the reactivity. as per reactivity series only metals above hydrogen. And what is the reason? Then मैं ask you reason question. तो उसको react नहीं करेगा अगर नीचे HCl2 plus H2 NaCl2 plus H2
Spend last time मुझे उससे अरे तो one is mg another अभी is CN टू देगा हाँ बोलो ना पर उसमें तो बैलेंस नहीं होना है करेगा ना वो balance बैलेंस सही है do it balance it हो गया two hydrogen two sodium two Cl done now for from both the sides. Every time count the number of atoms for both the side and one is writing answer now don't pull anyone's leg. You can come and try yes. हाँ चल आजा दूसरी रिएक्शन yes वहाँ से पूछना देख के नहीं आते हाँ बैठो good okay what size take हमारे साथ तेरे को एक और लास्ट हमको इतने सारे करने हैं अरे एक लास्ट है ना दूसरा भी है ना gases we have many gases कितने स्टूडेंट है 1 2 3 4 4 and 4 8 and 1 9 हो गया हर एक ने आके एक गैस का पूरा हो नो राइट तो इसको भी मैं ले अरे आवाज बस only one we want एक ही बस only one तो समझ में आ रहा है तो ज्यादा एक कर लेंगे ज्यादा पैसा नहीं करना go through it and for every gas at least remember one reaction method of research and this topic as it is there in 10 cent और थोड़े ज्यादा reactions है otherwise ऐसे okay shall we move for the next case yes understood now Yes. then right now आड़ा कैसे video reason question पूछेंगे फिर answer that question यस what are going to do next अभी जैसे कि यहाँ पे देखो we are using metal above metals so they may ask not this metal because this time also in exam they have asked you have to mention specifically they have mentioned above it they cannot have that yeah metals above addition that चलो next one second is oxygen write down all characters of oxygen write down बोलना सब आता है लिखो उसको nature color order action on litmus paper and tell me how you will prepare or don't copy पहले बता दो मुझे न्यूट्रल है पहले लिखो आपके बोला लिखो अरे तो लिख भाई लिख पे हो जाए जिसका मैंने हो जाए मैंने हो गया समझा हमें you have written this अपने इक्वल हाँ सब कुछ color order action on litmus paper अभी देखो for hydrogen we have done action on burning candle same thing we can do here also then test कर गया ये oxygen then test oxygen then test नहीं oxygen है oxygen का oxide देख करना इसको अगर हीट करें then test taste बनाते हैं this speaking British whitish blue color that color it is due to this metal not because of oxygen so whatever colors we have discussed now is presence of the metal so look at that is the color moving on I purpose yes doubt और लास्ट क्वेश्चन is it out here okay so color order litmus paper that you have written and we know oxygen we can prepare by using oxides of metal oxide okay now when I am saying metal oxide and if you are going for the flame test so whichever metal it is used according to that it will give flame test sodium oxide use कर रहे हो this reddish yellow will be if you are using copper oxide
Okay, according to that color of copper on flame, it will form color. If you are using calcium oxide, which color will be formed? Brick red. If you are using lead oxide, then bluish white. Okay, so that color red bluish white. bluish white. What's lead oxide? Lead oxide. कोई दूसरा अगर कोई combination में दूसरा metal है ना, then different color is formed. So here it is given under preparation. Heat heavy metallic oxide. Heat heavy metallic oxide. Write down reaction in word. Heavy metallic oxide. Heavy metallic, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है ना, metal plus acid enter. Heavy metallic oxide. We have to heat it. Okay. Giving, put arrow on arrow, make small triangle. This is notation for heating. Heavy metallic oxide. On heating it forms metal oxide. Either it will form metal oxide, put oblique on metal. On metal, either metal oxide or metal. Which metal oxide you are using, it depends on that. So either metal oxide or metal, and another main product of our reaction is oxygen gas. So write down O2 in upward arrow. Is it bold? Now downward arrow precipitation. Precipitation is right now. Kiska? The reaction. Who is writing reaction now? So many hands. You know, after it, you must jump. Or properly you can write reaction. Sure. Reaction कहाँ से है? Textbook में से, volume में से और textbook में से. तो क्या reaction है? But such metal oxide it is present here. Balance करना है reaction को. वो लोग भी सकते हैं. Textbook में. अबे on the spot to remember those reaction to make it is not easy. You can use it. एक ही नाम दो रे. अच्छा ले एक काम कर दो अच्छे राइट नाउ वन वो रिएक्शन चेक भी करना पड़ेगा. बेटा we are saying heavy metal oxide. Metal oxide. H2O it is metal oxide. Then देखो duster use करो, use duster. Understood now? चलो and here again there is formation of H2 and O2. We need only O2, not H2. मुझे लिखना बैठ चुपचाप से मैं दूसरा वाला देती हूँ. मेरे को लिखना हाँ go. लेकिन इसके बाद क्यों नहीं उठेगा? नहीं. Then every time you will go. एक बच्चे हमारा अगर रॉन्ग करा तो अगली बार करना चाहिए. हाँ, we are aware of that. You are so good. I know that. अरे नहीं, do it. चलो. How long you will take? I have to complete this topic. It is only for gold now. Sodium oxide. ये क्या चीज बनाया? What you made? Whether such reactions happen. हाँ. And Na it is not heavy. Atomic number of Na 11. जब वहाँ पे पहले ही दिया है heavy metal oxide. तो कैसे लगते दो प्लीज. चलो रखो आ जाओ वापस. बेटा जब जैसे heavy बोला तो heavy यूज करो. जैसे उससे पहले H2O के साथ रिएक्शन करा था. It is not happening ना. मेटल बोला है तो we cannot carry out reaction with it. Guys, here only ना in this circle. Right ना अच्छा वाला टॉपिक है ना. नेक्स्ट से फुल मार्क्स निकालना है. In practical chemistry, it is for maybe for 6 to 7 marks. And that's why I said. So you can take your book now. Yes.
ऑन द स्पॉट इमीडिएटली नहीं आने वाला है, इट इज 2:30 को आएगी। 2:30 एनर्जी कंप्रेशन टेक्निक को अप्लाई करो, लेट का एटॉमिक नंबर है मास नंबर चेंज दिस हेवी में। चलो, so once we will complete this one, we have to discuss action on चलो एक ऑलरेडी करा है वर्कशीट वो आया नहीं रहा, let him come first. हो गया, then you have written first one, एक ही only one, वो ऑक्सीजन शो बाय अपवर्ड एरो ना, yes. हाँ वो ट्रायंगल भी अंडरस्टूड। चलो come back. So this can be done, right? Then next one, next point. Action on litmus paper. I think you all have completed this action on litmus paper. Then carbon dioxide. एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड में और कुछ तो है। Action on burning candle. Glowing wood is हाँ, it glows. और यहाँ पे दिया है word. Rekindles of glowing. तो remember that word. Rekindles of. Then next one, third one, the gas stove. wait. अभी अपना मुंह बंद करो, जिसको मैं पूछती हूँ वही आंसर देगा। चलो जाओ, कम फास्ट है। यार आपका नाम तो मुझे पता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, it is acidic, basic और to complete the remaining part. क्या क्या लिखना है, पॉइंट पता है ना? नेचर, एक्शन ऑन लिटमस पेपर, दैट ऑल कलर, वो तो कॉमन है। Okay, खाली you have to change according to the gas which you are using. हाँ, nature, I don't know. Acid, okay. Litmus paper change. Which one? Blue to red. And color? Order? Any order is there for CO2? Shanti, who yours? Any color? Order? Right. कितना कुछ सोचना पड़ रहा था? Done? Okay. Now how we can prepare carbon dioxide? इधर दो। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको लिखा के दिया है। जनरेटिंग Pricing test. Basically how we can prepare it? लिखा है ना हमने, dry heat test, when you heat salt containing carbonate, if you form carbon dioxide, right now? हाँ, carbonate वाला salt if you are heating it, copper carbonate पे यूज करेंगे। एक मिनट, एक चीज याद रखो, केमिस्ट्री में whichever example you are giving, be careful. अपने मन से जो रिएक्शन नहीं होता है ना, वाले एग्जांपल मत बनाओ, जैसे कि वाटर वाला एग्जांपल लो, जैसे याद रखने के लिए बताइए, बस कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी यूज, मैं देखा कि रिएक्शन है नथिंग रिएक्शन लिखो एक ना चांदी को एंड राइट ऑन टेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट बेटा यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन रिएक्शन मेटल कार्बोनेट giving metal oxide, on heating it gives metal oxide plus carbon dioxide. Now your reaction becomes easy. Take calcium carbonate and complete this reaction. Calcium carbonate formula बेटा शांति formula without looking बता दो formula क्या है? It's not that शांति, वो वाली शांति नहीं नाम लिखो। Calcium carbonate formula? Yes, sir. Okay. On heating it forms calcium oxide, CaO plus carbon dioxide. So what required reagent gas it is prepared here?
मैं उधर कर बोल रही पढ़िए पता है क्योंकि होली पे वही कलर बनाता है ना उसके दाने अरे ना When you are talking with me, when you are questioning, okay, I'm happy. But when it is coming for debate, as such, it is not debate here, it is only fighting. And why every time you are using array, I'm not your friend. sorry I'm just asking you Because this habit is very bad, give this habit. With whoever, quality person, whoever it may be. Array. जानते हैं ना? I just heard हाँ, एक मिनट पहले उसका होने दो ना आगे ही will start with the budget spend. कैसे डॉक्टर में अगर ऐसे यूज करते हो फिर फिर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हम HCl that is one type of reaction preparation. Okay, हो गया पंजनोस पंजन spend नाम ना बोलो calcium carbonate it is not green color it is fighting color it is chuna. If calcium carbonate, if it is not green color, how you can say calcium oxide it is green color? पता नहीं मैंने नहीं देखा but as per my knowledge it is white. Calcium वाले all compounds they are white in color. Okay, lady finger which we are using in vegetable. Okay, it also contain calcium and then calcium where it is present in seeds. Milk we are using every day. मिल्क कलर फीड नहीं होता मिल्क It is white in color. but भिंडी तो ग्रीन है So ये अभी जैसे okay, next. देखो, this is one type of reaction where we are heating metals of carbonate. Another type is metal carbonate, right? Or metal carbonate or hydrogen carbonate. Metal, this is metal hydrogen carbonate. Huh? Plus dilute acid. It forms salt, water, and carbon dioxide. Three products are formed. Salt, water, and carbon dioxide. बेटा, आप देखो ये reaction with calcium carbonate and HCl. Products are salt, water, and carbon dioxide. If you want, you can take the notebook. कुछ लिखा नहीं है उसमें फॉर्मूला नहीं लिखा इससे भी लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट टेक कार्बन फ्रॉम देयर कैल्शियम carbonate formula CaCO3 then with HCl मैंने बोला हम कुछ करने दो मैं करते देना इनके केवल थोड़ी reaction. Try the next one, na? With metal hydrogen carbonate. तो करो अभी पता चल गया ना? Try the next one with metal hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. Better next one. Calcium carbonate with HCl. Three products are there. ये erase करो. Erase this. Which are those three products? Water, carbon dioxide, and water. Okay, plus carbon dioxide. And और क्या मिलता है? Salt बच गया. Balance है. With respect to valency and everything, it is balanced. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट Sodium hydrogen carbonate. में दो लगेगा आपके बुक में हाइड्रोजन नहीं CaCO2 बोलता था
Okay, balance calcium 1, carbon 1, oxygen 3, 1, 3, hydrogen 2, Cl 2. इतना क्यों है लगा आपको? हाँ? चलो next one. With metal hydrogen ion you have written reaction with metal hydrogen carbonate NaSCO3. Here with metal hydrogen carbonate. मैं करूँगा please. एक मिनट. Reaction लिखा है कि नहीं लिखा है? क्यों? मैंने अभी नहीं बोला. मैंने अभी नहीं बोला है. ऑलरेडी बोल के हो चुका है. फॉर्मूला भी दे के हो चुका है. हाँ. Be here. It's a practice. So what I have said was is not at all. And we are doing every day. We are doing this one. Search. Okay, next one. Next is chlorine gas. Chlorine gas. Chlorine. Acid करो. शांति वो वाली. हाँ चुप बैठो. बताओ 4 points कौन से हैं? तो greenish element करूँगा. Okay. तो फिर छोटे पंचन order. Yes. And it turns depurates red. So this acidic in nature. These are only 4 points. And next point will be your method of preparation. और 10th में जाओगे reactions. समझ में आया? एक स्टेप और बढ़ा. So write down first is 4 points. ठीक है बेटा आपने? तो बेटा कोर्स का क्लोरीन का एंड शांति किसी है ना टॉपिक? रिपीट हो ना? So this is there for your final exam. है ना? Yes, okay. Ora, you have to do homework on preparation part. Otherwise it is you. आपको flame test करनी है. Which metal is used for flame test? Potassium. Aluminium. Yeah. Okay. So color for this one is greenish yellow. Smell, choking pungent smell, acidic in nature. Two litmus turns red. Now write down preparation. Oxidizing agent. Oxidizing agent plus concentrated HCl, CO and Cl. Oxidizing agent plus on positive side concentrated HCl giving without heating you will get the product. Metal chloride plus water plus chlorine plus water plus chlorine. Okay, again 3 products: salt, water and chlorine gas. Salt, water and chlorine gas. मेटल लिखा है. हाँ मेटल बोला. तो क्या बोला? मेटल क्लोराइड, salt and water. क्या बोल लिखा है वहाँ पे? NaCl potassium. Yeah. I want to put it in the day. किसका बना है? Okay, write down. Reaction next time. PP3O4 is again heavy metal oxide. Okay, PP3O4 plus 8 HCl. Now you balance the remaining part of the reaction. अब तो आई नहीं मेरे पास कुछ लिखा और मैंने बुक बंद करके वो कर दिया. चेक करो. Salt, water and chlorine. अरे भाई आयुष पहले water और ये लिखो. वाटर chlorine. PM3 वो क्या बोलते हैं? Metal chloride. ना
प्लम्बिंग ऑक्साइड बोलते हैं पीवीसी को योग करो प्लम्बिक ऑक्साइड नाम क्या उसका पीवीसी योग करो रेड मतलब उसका 3 या 2 3 है 3 तो मेरा बैलेंस भी हो गया मेरा भी हो गया हाँ, तेरा तो then next is with MnO2 बैलेंस है MnO2 plus 4H. Remember that sequence, it is always metal, chloride, salt, then water and chlorine. बैलेंस हाँ हो गया Done? I'm already calculated. PVCl 3 है हाँ PVCl 3 है कहाँ पे? PVCl 2 है PVCl 3 किधर से आया? PVCl 3 PVCl 2 चलो next one. Now 2 tests are more for this one. First one write down. Color वाला तो हमने कर लिया है ना. Next one. First paper का for color changing color that reaction is given. You will take from your book ना. और मैं आपको KI वाला लिखूंगा. तो आपको इस तरह की question मिलेगा. It turns starch, iodine, paper, blue bracket right down. KI plus starch solution. KI plus starch solution. This is starch, iodine, paper, huh? क्या है प्लस Starch solution. KI plus starch solution, complete that bracket. Blue, black. Next time write down reaction Cl2 plus 2 Ki. Cl2 plus 2 Ki giving 2 KCl plus I2. I2 as iodine is formed, it will be converted into blue black color. Then next one with silver nitrate. Silver nitrate solution. If Cl2 gas is passed in silver nitrate solution, white precipitation of AgCl is formed. White precipitation of AgCl is formed. करना क्या है? Just we have to pass that gas in silver nitrate solution. Okay, silver nitrate is transparent solution like water. Once we pass Cl gas, it will become white. Agn. Silver nitrate is Agn. क्या? Silver nitrate is hydrogen chloride. Silver. For what you need hydrogen chloride? Now we have to just pass Cl2 gas. Okay. And if it is for HCl gas also now, that test it is for. अब अगर हम पास में करेंगे इक्विट को तो थोड़ा रजिस्टर करने की क्या हो गया बड़ा प्रॉब्लम Hardly 20 minutes are remaining. So it is everything is dashing, jumping like gas. Random दो state. चार मिनट हाँ पहले हम बहुत हेवी हो गया मैं वैसे भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बहुत है कहाँ टफ है? Difficult. With the help of chart again, you think it is difficult? Only thing is that you have to do work on the preparation reaction. चुप. चार्ज लॉ वाले क्वेश्चन था टेस्ट में कौन सा वाला? चार्ज लॉ वाला तो मेरे को टेम्परेचर डबल आया जो आंसर है चार्ज लॉ वाला पहले ये बताओ क्वेश्चन क्या है? Problem वाला you are talking. Okay. So charge law it is on for volume and temperature. Okay, तो क्या था? According to that you have to work on it. हाँ मैं वो जो आंसर दिया है मैं तो उन लोगों ने 1/6 of the original pressure ऐसे चाहिए अच्छा see here 1/5 and 1/6 वाला जो है ना. वो लोग ने दो बार एक्स किया तो 2x हो रहा है आंसर मैंने सिर्फ टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर Answer को
मैं तो फोटो में डांस रही ये बात नहीं, हम छापने की कोशिश कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं। वैसे भी मेरे पास कौन बदलते हैं? ये दो क्वेश्चन बदलते हैं। एक बदलते हैं। बदलते हैं पागल बना रहा है मेरे को कितने बार मैंने इंग्लिश का लेटर किया तो दूसरों के बदल तो आपको आंसर क्या पड़ा? आपका आंसर डबल मेरे को 91 आया है। मैं मेरे को गलत के अंदर करता 92 कैसे आएगा मेरे को 20 आया कैलकुलेशन हमें 12 हो जाए से पर चेक कर लो आंसर इन दिस वैल्यू चेक योर आंसर आई लोग से गांव दरवाजे what we want हां मेरे को 16 आया है, 16 है। मेरे को इसे टूटे आया है नहीं, so I am आया तो चलो next one hydrogen chloride next one hydrogen chloride that's I'm मैं बोलता हूँ यार नाम बहुत है हो गया नाम दिया shut up you know I have to complete this मैम 3 मिनट दे दो प्लीज 3 मैं मिनट आज के लिए पाँच 3 मिनट already I have मैम आपके लिए मैंने करना क्या दो अभी आप टाइम दे दिया आपको अच्छे से समझने के लिए टाइम मिलेगा आपको आज के लिए आप अच्छे से टाइम दे आपको सेंस करना है so what so yeah this topic is very time standard now एक्चुअली खत्म हो जाना था नाम क्या है नाम last time is fine और लास्ट टाइम last time लास्ट डे hydrogen chloride ऐसे ज्यादा बोलोगे तो भी नहीं yes next one hydrogen chloride write down select the spelling for oh yeah difficult है ऐसे मत देखो hydrogen chloride मैं बहुत खुलसा है हाँ very good चलिए nature color order सब shortcut हाँ action on litmus paper नाइट्रोजन HCA hydrogen okay next now preparation we have to work on preparation remaining I think I hope you have all have completed 4 points and 2 चैप्टर खत्म no मैं it's not और कितना पेजेस है 15 ना अभी इसके बाद में ना मैं खाली आपसे प्रॉपर्टीज पूछूंगी तो कंप्लीट करो एक metal chloride diagram reaction metal chloride with concentrated sulfuric acid product is metal hydrogen sulfate मैं 2 मिनट दो ना metal hydrogen sulfate and hydrogen chloride gas again I am repeating metal chloride plus concentrated sulfuric acid product is metal hydrogen sulfate this formula this name I have stated and given you so that you can write down reaction properly when it is hydrogen sulfate you have to place one hydrogen atom don't forget and hydrogen chloride gas so your main product is hydrogen chloride now write down reaction by using NaCl first reaction and second by using KCl with concentrated sulfuric acid चलिए फटाफट बोलो मेटल सल्फेट मेटल हाइड्रोजन करो बैलेंस रिएक्शन then you will understand हो गया and with the hydrogen से one तो खुद का then next main product for what we are doing this reaction write down main one now balance the reaction मैंने इसके बाद NaCl के बाद में KCl ओके अपना बैलेंस करना हाँ बैलेंस 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 में समझ में आएगा where you made this MKC and मैं देख रहा हूँ सब शॉप मेरा तो सही है लिख हो गया चलो डन शांति डन बोल एक with NaCl and KCl what is formula for metal hydrogen sulfate आपने लिखा है फर्स्ट वाले का क्या है
तो बुक में से मत देखो आपने क्या लिखा है NaHSO4 plus Cl2 you are doing HCl and there are two products है ना only two products metal hydrogen sulfate and our main product HCl. So these products two products are formed. Reactions you have already written. Same reaction is there with KCl. Then next one किस कलर वगैरह आपने सब लिख दिया है ना इसके लिए for HCl. Color and everything are written. Last 5 minutes are No, no, straight lines. last 5 minutes का जब पूरा 3 मिलेगा हो गया मैम चलो बेटा straight time last Chalo, next one, as it is acidic compound, it will react with base to form salt. Okay, now one more thing is that if you keep rod deep in NH4 OH solution, then whatever gas you are getting, it is HCl gas, it is colorless thick gas. But with rod deep in NH4 OH, you will get thick. Thick, yes, thin से thick हो जाए. हाँ, एक मिनट जरा बेटा टेक सकते हैं. ये आपका नोट हो. So this is test tube. In this we will have the reacting mixture. From this test tube, HCl gas it will come out. It will be initially thin. दिखता है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता है. But इसके माउथ के पास में if you keep rod dipped in NH4OH or normal ammonia also, this thin fume it will be converted into thick. अच्छा खासा तुमको white color दिखाई दे. And our this one HCl again it contains Cl. Just now we have done test with silver nitrate. Right now, so that colorless solution it will be converted into white PPT. White PPT of silver chloride are again precipitate. Sorry, जो अदर PPT करने का white PPT of precipitation of silver chloride is of right one. If if a rod deep in ammonia solution. If rod deep in ammonia solution kept near the mouth of test tube, mouth of test tube, dense white fumes of ammonium chloride are formed. May I take one more lecture of this topic? No. Dense white fumes of ammonium because chlorides are not of ammonium chloride are formed. Okay, next line write down reaction NH3 with HCl. What is NH3 with HCl? Acid base reaction. now अभी तो last 5 मिनट बचा है ना हम अभी NH4Cl NH4Cl. And second reaction is with silver nitrate. So when this gas is passed in silver nitrate solution, then white precipitation of silver chloride is formed obtained. Okay, see listen here. As per my knowledge, we have to complete still 6 more gases. I will ask for one more lecture if they are giving. Okay, otherwise our syllabus is completed. Not from my side. Okay, whatever it may be the case, but you prepare well for your final exam of 9. Once it is done, purchase books for 10th standard and start preparing. Start preparing. एक दिन का छुट्टी, 2 दिन का छुट्टी ना. Once your 10th standard board exam is over, now you take this. If you are giving 100% right from beginning, if you are utilizing full time from beginning, at the end it will become very easy.
Otherwise, till last day you have to struggle with organic chemistry, this topic, and metallurgy topic. Or this is not only the one subject which you have to prepare, and you have physics, bio, maths, but other subjects also. Okay? It is not only for chemistry I am saying, for all subjects start preparing set. Still it is not over, bed home. Better. And another thing, for board, at the end of November, December, they are providing the private circulation publication, they are providing solved board question papers. Solved board question papers. Now, as per my knowledge, the solved papers are of topper student. उसका वैसे ही फोटो निकाल के रहते जो मैंने देखे थे अब मुझे पता नहीं whether they have changed it or not but normally it is from that particular copy is of topper student. If you are not purchasing individually in small group, you can take one group, circulate that group in your book in your group, and please just have at least 3 results from that group. Go through all board question paper, previous year board question paper. Time waste नहीं करना है, अच्छे से study करना है, अच्छा marks score भी करना है. 10th standard it is not difficult. Many topics here as it is from 9th standard. ज़्यादा question में इधर उधर के फालतू बातों में time waste नहीं करके focus on your syllabus. Every time you get somewhere small injuries. Big injuries, okay? वो चालू ही है तुम्हारा? नहीं, dried. It is dried, completely dried. हाँ, वो तो बैठ के वही काम कर रहा है ना? हाँ, right. वो तो पता चल जाएगा, PDF. हाँ, right ना? Whatever mistakes you have done in your this previous exams. आपको तो पता है ना where you made mistake this for all. Don't repeat those mistakes. Read your textbook properly, points. मैं अभी नहीं हो सकता जब repeat करके अच्छा लग इसको लगा फटका उसको कहाँ पे I don't know then we start but the confidence I don't structure we are remain. अरे मेरे भाई माता है पहले 2 वक्त यार इसको लेकर आपको एक प्लस तो मैंने ये बताया था शायद while writing to explaining NaCl. If it is giving electron, it get positive charge. If it is taking electron, और सबका एक ही काम किया है मेरे मुझसे ही 2 काम right? For topper student, we are doing the same thing. We are practicing the same thing. Yes. क्योंकि वो आगे जाके गलती ना करें, उनको पता चले कि what you have to write. अच्छा तो जो किधर भी गलत नहीं मिला बस सही गलत Only for charge. हाँ ऐसा नहीं अच्छा पर what invented? कितना marks मिला? You said it is 69.5. 70.5 74. So remaining marks are कम आ गए 9.5. एक बैलेंस वाला 2 गया Okay. उसमें और सेक्शन बी में एक तो वो था मतलब And this all marks are deducted are from the same block. हाँ अटेम्प्ट से ही मार्क्स लिया मैंने था आपने प्रैक्टिस नहीं किया? किया था पहले अरे ये फाइनल अरे आया तो उससे तुम्हारा मार्क्स भी माइनस में चला गया. You have to remember where to apply which term. So properly you will apply negative, positive wherever it is required. शांति समझ में आया क्या क्या बोला वो? टॉपिक को इग्नोर मत करना. हाँ अभी से स्टडीज का स्टार्ट करो और उसके बाद क्या बोला था वो भी आपको याद है ना? फॉर नहीं बोल सकते उसको आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. नहीं मैं रिक्वेस्ट करूंगी फॉर 1 more लेक्चर इफ दे आर गिविंग ओके. इसलिए तो मैंने पहले से अपना स्पीच देके बाजू में हट गई. पढ़ाई करना है शांति के साथ खेलते नहीं है शांति आपको खेलते नहीं है. तो बोलो कि वो मेरा सामान मेरा उसके पास ही देता है.
Bye. All the best. Thank you. Five years in the university. कल आ रही है तू? चॉकलेट है चॉकलेट। अभी बर्थडे हैप्पी टाइम के मम्मा। इसका बर्थडे कल मेरा बर्थडे। नहीं भाई मालूम नहीं रहेगा इसीलिए मिल रहा है क्या लोगे भाई मेरे राशन चल पापा बात नहीं है। हाँ पैसे नहीं लाया पैसे नहीं लाया कितनी अच्छी दोस्ती भी क्या है? ये Yeah. अरे हाँ